Hello everyone. ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ biology lessons with କଲ୍ୟାଣୀ ରେ welcome କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର topic ହେଲା nucleus। Now nucleus ଆମ cell ର ବହୁତ important ଗୋଟେ organelle because nucleus ଭିତରେ genetic material ଅଛି ସେଟା protein expression ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି traits ସବୁ ହବ ସେଟାକୁ help କରୁଛି ସେଟାକୁ determine କରିବାରେ nucleus ଟା help କରୁଛି ସେଥିଲାଗି nucleus ଟା ଆମ cell ର ଗୋଟେ ବହୁତ important organelle। Now, the first time the scientist who described nucleus was Robert Brown in the year 1831. Then Fleming कौन कले ना से किसी basic dye use कले nucleus को observe करिया पाई। तापरे से he found out that inside the nucleus there is a darkly stained region. He coined the term chromatin for it. So the term chromatin was coined by Fleming. Now basically he used aniline dye which is a basic dye। एठी हम माइंड रे गोटे क्वेश्चन आसी परिबो कि आमे कोन पई बेसिक डाय ही यूज करि परिबा ता पई हमकु दरकार अछि न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर बुझिया पई। न्यूक्लियस भितरे हमरो अछि डीएनए। डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तारो चार्ज हैला कोन नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज हबा द्वारा से कौन करिबो ना से पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक डाई संगे रिएक्ट करि परिबो एंड that helps in staining the region। That's why in order to stain the chromatin or the nucleus we have to use basic dyes। commonly used basic dyes जोड़ा हमें यूज करि परिबा सेगुड़ा हेले तमर मिथाइल ब्लू क्रिस्टल वायलेट हेमाटोक्साइलिन। इटा टिके आउट ऑफ द सिलेबस बट कांसेप्ट जानिया बहुत इंपोर्टेंट कि हमें बेसिक डाय कोन पई यूज करिबा टू स्टेन द न्यूक्लियस। ओके, नाउ मोस्टली ऑल द सेल्स रे गोटे न्यूक्लियस थाए। किछि किछि सेल्स रे मोर देन वन न्यूक्लियस भी थाई पारे एंड देयर आर इवन सेल्स which lack nucleus। एटी गोटे important MCQ question आसुची। The examples of cells which do not have a nucleus are mammalian erythrocyte cells आउ plant cells रे जदि तमे देखिबो तो sieve tube cells रे भी हमरो nucleus नाही। Next we will move on to the structure of the nucleus। Now nucleus, as we can see in the picture, it looks under the microscope, it looks spherical in shape। It is bilayer, it is covered by a membrane bilayer। ता माने कोन गोटे outer membrane अछि आ गोटे inner membrane अछि, just like the plasma membrane। आउ किंतु एटी गोटे पॉइंट टू बी नोटेड हैला प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा जेमति कंटीन्यूअस रहउची एठी कोन होउची ना एठी हमरो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कंटीन्यूअस, इट इज डिसकंटीन्यूअस इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटीन्यूअस इन नेचर? ना किछि किछि जगह रे कोन हुए ना आउटर मेम्ब्रेन आउ इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हे जाए, सेही जगह रे गोटे गैप फॉर्म हे जाए। देखि परथबे एठी डायग्राम रे एटी जोटी को लेजर पॉइंट करछि एटी गोटे लाइटली स्टेन रीजन अछि, एटी भी अछि, एटी भी अछि। ए रीजन्स हैला कोन ना न्यूक्लियर पोर। हमें ता विषय रे नेक्स्ट स्लाइड रे डायग्राम अछि, हमें डिटेल ले करिबा। ओके, ता छडा इनसाइड द न्यूक्लियस जो हमरो साइटोप्लाज्म भेलिया गोटे डेंस एमोर्फस लिक्विड अछि। से डेंस अमोर्फस लिक्विड को आमे न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहूचु। Also we can see a spherical body inside the nucleus which is darkly stained। a spherical body को आमे न्यूक्लियोलस कहूचु। न्यूक्लियोलस रा मेन रोल कोन ना न्यूक्लियोलस is a site for active ribosomal RNA synthesis। तो जो cells रे more nucleoli थिबो, what does that mean? That means that the cells is actively carrying protein synthesis। एटा गोटे बहुत important concept। The cells which are actively carrying out protein synthesis have more number of which cell organelle? Nucleoli। Okay, and nucleoli are typically non-membranous।
or they lack a membrane. Okay, so the nucleolus is continuous with the nuclear matrix or the nucleoplasm. Okay, there may be one nucleolus present or more than one nucleus or nucleoli can be present, right? I hope it's clear. We'll move on to the next slide. Okay. Now, এটা detail रे ଆମର nucleus ର structure ଯେମିତି କି ମୁଁ previous slide ରେ ବୁଝେଇଥିଲି. This is the spherical structure of the nucleus. এটা ହେଲା ତାର outer membrane, এটা ହେଲା ତାର inner membrane. ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ कि outer membrane ଟା continuous with the endoplasmic reticulum, right? And it is sometimes can be associated with the ribosomes, then it is called as the rough endoplasmic reticulum. ता विषय में already पढ़ीचे तो मु एठी आउ ताकू कहूनी. आउ किछि किछि जगह रे आमे देखिबा कि ए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एंड को आपण मार्क करंतु देखिबा कि से माने फ्यूज हे जाई चंती और फ्यूज हबा जोगु हमर एठी गोटे गैप फॉर्म हे जाउची. ए गैप को आमे न्यूक्लियर पोर नहले न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहूछु. क्लियर हैला? आउटर मेम्ब्रेन of the nucleus, inner membrane. Outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum. Okay, outer membrane and inner membrane fuse to form the nuclear pore or nuclear pore complex. Okay, a nuclear membrane outer और inner भीतर स्पेस टाकू आमे कौन कहूचे ना से भीतर स्पेस टाकू आमे कहूचे perinuclear space. The space between the inner and the outer membrane is called as perinuclear space. Okay, inside the nucleus there is a dense amorphous liquid which is called as nuclear matrix or nucleoplasm, right? amara ebe ए न्यूक्लियोप्लाज्म भितरे और न्यूक्लियर मैट्रिक्स भितरे कौन थाए ना क्रोमैटिन थाए रेस्टिंग फेज रे नहले which later becomes folded and turns into chromosomes. ता छड़ा कौन थाए आरएनए थाए आउ कौन थाए न्यूक्लियोलस थाए. आमे ऑलरेडी डिस्कस करिचु न्यूक्लियोलस ता हैला कौन गोटे नॉन मेम्ब्रेनस organelle and it is responsible for RNA synthesis. राइट माने जो सेल्स बेसी आरएनए सिंथेसिस करूथुबे सेदिरे न्यूक्लियोलस मोर देखा जीवो. राइट, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट we will understand what is the function of nuclear pore. amar nuclear pore ta kon pai darkar, why the membranous structure is the membrane of nucleus is discontinuous in nature. Now to understand this ame बुझीबा को पड़िबो कि न्यूक्लियस भितर हमर मेनली अछि कोन जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक मटेरियल ता डीएनए रु हमर कोन हबो आरएनए सिंथेसिस हबो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रे. ए किंतु से आरएनए रु प्रोटीन ता हबा पई आरएनए ता को क्रॉस करिया को पड़िबो into the cytoplasm. Can I janichu protein synthesis takes place in the cytoplasm. That's why it has to move out from the inside of the nucleus to the cytoplasm, and that happens through the nuclear pore. Correct? आउ गोटे कौन फंक्शन रहिबो एबे एटी आरएनए टा पळे आसला आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस कला तो किछि तो प्रोटीन्स हमर साइटोप्लाज्म रे यूज हे जिवो आउ किछि प्रोटीन्स न्यूक्लियस को भी तो दरकार हबो ना तो से प्रोटीन्स गुडा केमिति पसिबे से प्रोटीन गुडा एंटर करि परिबे तमर न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स लो. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? Nuclear pore complex helps in the movement of RNA and proteins inside and outside of the nucleus, right? So this is a very important concept. Next ame jodi resting phase of the nucleus dekhiba tale ame dekhiba ki seti gote or the interface dekhiba seti ame dekhiba ki e gote spherical body nucleolus achi out जो आमर जेनेटिक मटेरियल टा लूज नेटवर्क
bhavare present achi. This is present, and that in the form of a loose network, and it is called as chromatin. Eventually, when the cell goes into the division phase, folding happens for the loose DNA networks, and it forms a highly folded structure called as the chromosomes. Let's look in. I hope this is the structure of the nucleus is clear. Next, let's move on to the next slide. एठी आमे इंटरफेस न्यूक्लियस को आ क्रोमैटिन को आउ टिके डिटेल ले देखिबा. Okay, the interface nucleus of a cell, when it is not dividing, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called as a chromatin. आमने कौन ना जितेबेले गोटे न्यूक्लियस टे रेस्टिंग फेज रे अछि और डिवाइड करूनी और इंटरफेज रे अछि, से समय रे कौन हुए ना तमरो न्यूक्लियर मटेरियल टा लॉन्ग नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स भाबरे प्रेजेंट थाए. आउ से फाइबर्स को मैं कौन कहू ना क्रोमैटिन. तो एक क्रोमैटिन भितरे हमर कौन थाए ना लूज नेटवर्क ऑफ डीएनए थाए. ता छड़ा किछि प्रोटीन्स थाए. को प्रोटीन्स थाए ना हिस्टोन प्रोटीन्स थाए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स थाए, and ता छड़ा किछि आरएनए भी थाए. So chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, non-histone proteins, and also RNA. A single human cell has approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. एटा गोटे already गोटे exam रे पढ़ी सारलानी केते length amara DNA रो, that is approximately 2 meter long. So एबे कथा है कि हमर 2 meter long DNA को हमें एते छोटो वॉल्यूम भीतर केमिति पैक करूछु. So for that there is something called as packing. ए जो प्रोटीन्स अछंती, हिस्टोन प्रोटीन्स अछंती, ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स अछंती, माने कोन करिवे ना सब डीएनए रो जो थ्रेड्स अछि ताकू क्लोज करिवारे निजो, like they will try to get them very close, and it will result in a highly folded structure, and that highly folded structure is very compact, and that compact structure is called as chromosome, which is seen during the dividing stage of the plant cells, dividing stage of the cells. Now we can, if we typically look into the structure of chromosome, every chromosome visible essentially has a primary constriction or the centromere. In the middle आमे देखुचे गोटे डार्कली स्टेन्ड रीजन अछि, से रीजन को आमे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहूचे और सेंट्रोमियर कहूचे. आउ सेंट्रोमियर को अटैच है कि कौन रहूची ना सेंट्रोमियर को अटैच है कि टू क्रोमैटिड्स रहूची. Also, centromere has on its side a disc-shaped structure called as a kinetochore. या विषय में next slide रे देखिबा. तो एबे जाके आमे देखिले कि क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर रे in the middle there is a primary constriction or centromere. Attached to it are the chromosome arms, and to the side of the centromere there is something jota me red रे highlight करिछि. There is a protein disc which is called as kinetochore. ए kinetochore रो कोन function थाए? ए kinetochore टा हमरो spindle fiber रो attachment रे help करे. आ जते बेले तमरो cell division हुए, one of the sister chromatid will be moving to the opposite pole. एटा एपटकु पळेबो, एटा एपटकु पळेबो. Okay, and spindle fibers goda attach karibe कोठी ना तमरा kinetochore रे. It's very important concept. Next, based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. Metacentric chromosome, which has a middle centromere and forms 2 equal arms of the chromosomes. Submetacentric chromosomes, in which the centromere is slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. एठी मु देखो गोटे लाइन बनेछि मिडिल रे.
जदि आमे देखि पारिबु मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रे कोन थाए ना सेंट्रोमियर टा पूरे मिडिल रे थाए आउ बोथ द क्रोमोसोम आर्म्स आर ऑफ इक्वल लेंथ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रे the centromere is little away from the middle or the midpoint. So the chromosome arms are slightly different from each other with respect to size. Acrocentric chromosome re centromere ta almost towards the terminal point or the end point re thai. So one very short arm and one long arm. और telocentric chromosome रे कौन हुए ना centromere टा पूरा in the end or terminus रे present थाए. Sometimes a few chromosomes also have a non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called as a satellite. या माने कौन ना sometimes कौन हुए ना किछि chromosomes रे primary constriction छड़ा आ गोटे जगह रे भी constriction थाए but सेटा कौन हुए ना किछि stain pick up करे ना it cannot be stained so that non-staining region is called as a satellite. ये ऊपर जो दीटा देखा होची एटा हला सैटेलाइट और एटा को हमें कहि परिबे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यार पोजीशन टा क्रोमोसोम रे कांस्टेंट थाए और सेमिति का क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम्स इन व्हिच द सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज सैट क्रोमोसोम्स. एटा आपनको सीबीएसई रो 11th क्लास रो बुक रे पिक्चर अछि of the metacentric, submetacentric, acrocentric or telocentric chromosome. Eta detailed chromosome structure with the kinetochore. Again, kinetochore is what? It is a protein disc to which the spindle fibers can attach, and during the cell division, they can aid in pulling apart of the sister chromatids so that the chromosome number is maintained and each of the new cell gets a pair of chromosome, one of the pair of the chromosomes. Okay, I hope it's all clear. That's all for today. Thank you.